चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे. सो लिसन हियर, वी हैव one polynomial px and this is the polynomial. Second polynomial is qx and this is the value of polynomial. Now from second polynomial we are dividing first one. तो हमने इस तरीके से लिख लिया इसको, ये सेकेंड पॉलिनॉमियल से हम फर्स्ट पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दिस पॉलिनॉमियल शुड बी in standard form, should be written in standard form. What do you mean by standard form? First of all, you write the term which is having highest power of x, then again lower power of x, then constant term. So when we express a polynomial like this, highest power of x, then lower power of x, then constant term, then such expression is called standard form. So first of all, you arrange this inside polynomial in the standard form. Now we are dividing by this. So how to divide? First of all, we will see this first term. We want 3x square. So now we have to see आप इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए. अगर मैं x को 3x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 3 इंटू 1 3 एंड x इंटू x इट विल बी x स्क्वायर. सो जब x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने पर 3x स्क्वायर जनरेट हो जाएगा. सो वी हैव टू सी दिस x is to be multiplied by which number to get this first number 3x square. So I have to multiply by 3x and I got this as 3x square. Now this 3x will also get multiplied by 1, then 3x 1 ja 3x and I get the second term. Now as we do in division, we will subtract these lower terms from the upper one. Now doing subtraction, the symbols will be changed. This is plus symbol, so it will become minus symbol. This is plus symbol, so it will be becoming negative symbol. So when we do subtraction of lower one, symbol will get changed. So I have changed the symbols. Now this is plus 3x square and this is minus 3x square. So these terms will get cancelled. 3x, from 3x I am subtracting 1x, then 2x will be remaining and the symbol of greater one, so minus symbol will be here. Now I am copying down this minus 1. ये minus 1 मैंने नीचे कॉपी कर लिया. अब मुझे इसमें डिवीजन करना है तो अगेन आई विल सी दिस टर्म. इस x को कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 2x आ जाए. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय माइनस 2 सो दैट ऑन प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू x then it will give minus 2x. So I have taken here minus 2 and when it will be product with the x, then I will get minus 2x. Similarly, minus 2 will get multiplied by 1, then I will get minus 2. Now again on subtraction, symbols will be changed. This minus will become plus, this minus will become plus. Now again, these two will get cancelled. Subtraction and I will be getting here 1. So you see, I was dividing by this term. Here power of x was 1, but now I am remaining with a term where power of x is 0. No x term is here. It means x to the power is 0. So when we get a term which has got lower power of x than the divisor one, then at that point this division stops
यानी जैसे ही मेरे रिमाइंडर में यहाँ पर x की डिग्री कम आ जाती है डिवाइज़र से, यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे डिग्री कम आ जाती है यहाँ पर रिमाइंडर में, तब हम स्टॉप कर देंगे डिवीजन को, यानी एट दिस पॉइंट दिस वन विल बी कॉल्ड रिमाइंडर, this is called divisor, and this complete will become quotient, and this inner part is called dividend. So I have got this as remainder. This was my divisor. आप जिससे डिवाइड कर रहे थे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिविडेंड, और डिवाइड करके जो ऊपर आ रहा है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन. सो होपफुली दिस ऑल इज क्लियर, and rest we will discuss tomorrow.